सो प्रोसेसिंग फर्स्ट इज विदरिंग. विदरिंग में क्या होता है? द टी लीव्स व्हेन ग्रीन कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. To remove this moisture, the leaves are spread over racks and air is passed through them. After they become soft, they are sent for rolling. Rolling. Rolling gives twist to the leaves. The leaf cells die and the natural juice is exposed to atmosphere that helps for fermentation. Then after rolling it comes fermentation. In fermentation, the leaves are spread in a special tray over a cement table. Special tray over a cement table. Cement table. During this process, टी का टैनिंग इज पार्टली ऑक्सीडाइज. टी का जो टैनिंग होता है वो पार्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है. द टैनिंग ऑफ इन टी इज पार्टली ऑक्सीडाइज एंड द कलर ऑफ लीफ चेंजेस टू कॉपर रेड. कॉपर रेड कलर हो जाता है. ठीक है. नाउ इज ड्राइंग. ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है? लीव्स को एक कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है और फिर उस कन्वेयर बेल्ट को ओवन में डाल दिया जाता है जहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर में उसको गर्म किया जाता है. अब क्या होता है इस प्रोसेस के बाद? ड्राइंग या फिर फिक्सिंग प्रोसेस जो बोलते हैं. इसके बाद इन पत्तों को उसका ब्लैक कलर वापस मिल जाता है और अब वो सॉर्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं. पहला है विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग एंड फिक्सिंग. अब आ रहा है सॉर्टिंग. सॉर्टिंग क्या होता है? आफ्टर ड्राइंग द लीव्स आर सॉर्टेड आउट इन वेरियस ग्रेड्स विद द हेल्प ऑफ सिफ्टर्स विद डिफरेंट साइज ऑफ मेशेस. आफ्टर sorting, they are given the brand names denoting the size of the leaves like Pioche, Broken Orange, Dust, etc. Pioche, Broken Orange, and Dust, etc. The above 5 operations of processing are part of orthodox method. ये पहले के थे. अब मेथड यूज होता है CTC मेथड, कटक मेथड. क्या होता है? क्रशिंग, क्रशिंग, टीयरिंग और कर्लिंग. क्रशिंग, टीयरिंग, कर्लिंग, ये सब एक मशीन को यूज़ करके किया जाता है, ये तीनों प्रोसेस. ओके. अब है ब्लेंडिंग. द प्लांट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ क्लाइमेट इट इज़ ग्रोन इन. दस बाय ब्लेंडिंग द टी प्लांटर प्रिपेयर्स हिज ओन ब्रांड टू सप्लाई हिज कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्लेवर, color, texture. Each brand will have its own characteristic flavor and the blend is a closely guarded secret. Packing. The tea, as we see in the market, needs a lot of care while packing to protect its flavor. Thus, generally plywood case with a lining of aluminium foil paper is used to keep the tea fresh and retain its flavor. After packing, the tea chests are marked and sent to the nearest port for export. Ready-made tea packs, tea bags and iced tea have recently come in as the latest products in the market. Now problems of टी प्लांटेशन. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टी प्लांटेशन? पहले तो क्या है, टी का प्राइस कम रहा है, प्रोडक्शन लेस हो रहा है, लेबर्स नहीं मिल रहे हैं, मशीन कम हो जाने से, मतलब पुराने हो जाने से सिक मशीन इंडस्ट्री हो जा रहा है, उनको रखने का जगह नहीं हो रहा है, पेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है. अलॉन्ग विथ मस्कीटो बग, a disease called bacterial black spot नाम का एक disease है, bacterial black spot has also affected many plantation in northeastern states. Now areas and states. Tea cultivation in India is highly concentrated in a few selected regions. The two main areas known for tea production in India are Northeast India and South India. Now Northeast India में 3 जगह होता है, आसाम हिल्स रीजन, ब्रह्मपुत्र वैली एंड वेस्ट बंगाल. ओके. पहला है आसाम हिल्स. Assam Hills is the largest tea producing area in the world. The conditions are most favorable with over 250 cm of rainfall and temperature above 20 degrees Celsius. Morning fog helps and frost never occurs. Moreover, labor is available in plenty. Hence, hand picking is made easy. Assam produces the most popular tea that is pungent in taste. It is strong and used for blending the milder ones. It produces over 40% of the tea in the country. Brahmaputra Valley. On both sides of this valley, tea plantation are a common sight, with rainfall above 200 to 300 cm and high temperature with high humidity. The area provides ideal condition for cultivation. The cropping is done from April to December. This tea is in great demand
all over the world and is used for blending because of its strong flavor and color. April to December AD. Okay. Now West Bengal. West Bengal is the second largest producer. The entire tea of West Bengal is grown in three northern districts of Darjeeling. Three northern districts of Darjeeling, Jalpaipur, and Kuch Bihar. DJBC. Darjeeling, Jalpaiguri, and Kuch Bihar. Here the tree is grown on Himalaya slopes. Soils are red loam and sandy loam, and the annual rainfall varies from 300 to 500. Darjeeling tea is famous for its typical flavor, most popular brand being Green Lipton. Inferior qualities blended with Assam tea for flavor and liqueur. Tea is also grown in Himachal Pradesh, Tripura, Manipur, and Arunachal Pradesh. South India. The tea is produced in Nilgiri, Cardamom, Palni, and Anamali Hills. Nilgiri, Cardamom, Palni, Anamali Hills in Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka states, extending from 9 degree north to 14 degree north latitude. Tea gardens are located mostly between 300 to 1800 meter altitude. The temperature are always high and rainfall exceeds 400 cm. There is never any fear of frost and conditions are ideal. Hence, productivity is higher through though quality is inferior. Temperature is always high and rainfall exceeds 400 cm. There is never any fear of frost and condition are ideal. Hence, productivity is higher though quality is inferior. Most of the region get rain from both monsoon and rainfall is well distributed. Most of the regions get rain from both monsoon and rainfall is well distributed. Soils are mostly red, yellow, and laterite in origin. The cropping season is on